ओके जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि द डायग्राम्स शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स of four elements, which two elements are metals? हाँ जी, बेटा कौन बताएगा which two elements are metals? Yes. 1 Sir, and is 3. it 1 and 2 कैसे बेटा, क्यों क्यों? 1 and 3. 1 and 3 कैसे बेटा? वजह 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 वजह। Because element 1 is in group 1 and element 3 is in group 2 and they're both metals. गुड, 1 and 3 is correct. 1 and 3 is correct क्योंकि बेटा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बेटा they are called metals. They are metals. Okay. So ये याद रखिएगा. Element Z has the following properties. It has a high melting point. Its presence can lower the activation energy for a reaction. What type of element is Z? मतलब ये तो कैटलिस्ट वाली प्रॉपर्टी बता रहा है जो हमने कल डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो. So This was a transition this is a metal. transition metal. Exactly, yes. Element X is a solid at room temperature. थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूंगा, आप लोगों ने किया है बट मैं उसको ओवरव्यू करवा रहा हूँ. Element X is a solid at room temperature. It needs 1 electron per atom to gain the electronic configuration of a noble gas. It has the least reactive element in its group. What is the element X? Yes, Sir, this is is it good question, fluorine? technical, tricky question. Yes, Astatine. Li? Li. astatine. Li, लिथियम. बेटा लिथियम तो बहुत रिएक्टिव मेटल है यार, लिथियम तो नहीं हो सकता. Sir, is माहम, it व्हाट डू यू से? fluorine? It's शहजादी. astatine. नो बेटा, नो. नो. ये कौन था? B? हु इज दिस? B. Adia. माहम. Sir, B. हादिया. हादिया. ओके, हादिया. यस शहजादी. व्हाट अबाउट मोहम्मद, मुस्तफा, इब्राहिम, हुजैफा, हमजा, हमना, Sir, noble इलियास? gases have B a for gold. Reactivity inert keeps electron, them right? in the group. B for bull. Wow. Beta, the answer is A. If they gain 1 electron to complete their octet, because they have already 7 valence electrons. Simple. So AT is related to AT belongs to group 7. तो ये ग्रुप 7 का मेंबर है और ग्रुप 7 के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सिंपल. ओके, डन. आगे चलो. हाँ हाँ. ठीक है. सर वो ओके फर्स्ट का आंसर बी था क्या? जी बेटा, बी था आंसर. ओके. Okay, group 4, question 4, sorry. Which pair of letters represents elements that are in the same period? Sir, is it इसका R क्या and S? कहोगे बेटा? Option D. R and S. Which pair of letters represents elements that are in the same period? Beta, this is the period. This is the period. This is the group. This is Sir, the group. option D. This Sir, is the D. group. Is it D? Exactly. So the answer is doctor. Yes, D is correct. Okay, good. Which law shows the correct number of protons and electrons in the ion of an element in group 2 Is of the it B? periodic table? Sir, is Yes. it A? Sir, B is for it bum. B? B. Okay. B, sir. Beta, which law shows the correct number of protons and electrons in the ion of an element in group 2? So the B. answer is B, because B is magnesium. Magnesium has 12 proton number. Z is equal to 12. So beta, it has 12 protons, but the ion of magnesium is Mg2 plus. Mg2 plus. Mg2 plus means proton remains the same, but electrons would be 10 electrons because 2 plus means कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और फिर इसी तरह से ये इस पे पूरा उतर रहा है. So the protons are 12 and the number of electrons are 10. Yes, give the name or symbol of the element in group 3 and period 4. Yes.
Sir, is it gallium? So you have to look at the periodic table. Group 3 Sir, and period GA, 4. Sir, GA, sir. Let me gallium. check. GA, Let gallium, sir. me check. Okay. Let me check this. I have the periodic table. So we have to look at period and group. After looking at, we have to match what type of element is this. Period 3 and what he was saying? Group 3, Group. period 4. So this is group Sir, is it 3. gallium? This is GA. group 3 and period 4. 1, 2, 3, 4. Exactly. So the GA is correct. Gallium is correct. Good. Good boy. Okay, gallium. An element in period 3 that is a good conductor of electricity. Aluminium. Sodium. Aluminium. Sodium. Sodium. Aluminium. Magnesium More also, number sir. of electrons. More number of electrons. More number of electron means good conductor of electricity. In its metallic bonding, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है. Sir, could it be any other element? एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? बेटा Sir, can it be मेटल sodium सबसे or पहले तो manganese? प्रायोरिटी हमारी ये है. प्रायोरिटी तो हमारी मेटल ही होता है, लेकिन बेटा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस लाइक इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो गुड कंडक्टर है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो फिर गुड कंडक्टर नहीं है. लाइक सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. जब आप इसका मेटालिक बॉन्डिंग डायग्राम बनाते हैं तो उसमें मेटालिक मेटालिक लैटिस डायग्राम जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, जब हम वो बनाते हैं तो sodium loses only one Sir, electron. On the but other don't hand, the magnesium loses 2 electron. Yes. sir, but don't the elements after aluminium have more electrons? Like gallium or indium? Beta, they are, like we can say metalloids. They have the dual characteristics of metal and non-metal. So they ये इतने अच्छे Sir, conductor नहीं होते. इनका dual behavior है. Yes. in the reactivity series, like, isn't sodium like above aluminium? Beta, reactivity is something else, and conductivity is something else. You cannot compare these two properties. Okay. 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 C. Yes. Fluorine. Fluorine. Sorry. Exactly. Fluorine. This is fluorine. This is fluorine. Because reactivity decreases Sir, down the group in group 7. oh, okay. In group And 1, metals it की increases. reactivity increases. Exactly. वो दोनों एक दूसरे के reverse हैं. Okay. Okay, so Next, chlorine D. to fluorine. Oh, fluorine. Okay. Fluorine is the Nitrogen. most reactive. Nitrogen, sir. Nitrogen. Nitrogen. Ammonia. Okay, good. Nitrogen है. Good. Next. Neon. Ne. Neon. Argon. ये भाई Sir, एक और आया argon वाला. neon. Neon. Containing 8 Neon. electrons in its outer shell. Helium. Helium. हीलियम में तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नियॉन कह लो इसको आप. Argon in group 8. Containing 8 electrons in its outer shell. नियॉन के आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आर्गन के भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके. Silver is a transition element with proton number 47. Use the periodic table to state the number of occupied electron shells in an 108. atom of silver. To state the number of occupied electron shells. Better, if let's suppose if I have the periodic table, so if you can see this, 5 periodic electron table cells. will Sir, tell you. 108. I think. No, beta, he is asking कि उसमें electron shells कितने हैं. तो बेटा, this is the silver. This is the There's silver 7. that is in group in period. What is the period number for Sir, silver? 6. No, 5. Period number is
5. 1, 2, 3, 4, 5. Period number is 5. If the period number is 5, it means that if the period number is 5, it means that it will be having 5 electron shells. Simple. Simple. Beta, period number is going to tell you the total number of shells. So aren't we like supposed to write the electrons? नहीं बेटा, वो उसने क्या कहा है? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स. So I wrote five उसने electron मेंशन shells. किया है पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स. फिर मैंने बस लिख दिया 5 electron shells. ठीक है ऐसे. यस, सही है. ओके, नेक्स्ट. So high melting and boiling points and good catalyst. ओके Sir, Transition uses metal. catalysts. बेटा, They, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो सारे मेटल्स का होता है यार. क्या कहते हो? sir, they राइट? They uses form colored It's catalysts. compounds. transition metals. Good catalyst, Sir, wave rotation they state. decrease They form activation color energy. Sir, compounds. And they it make colored exhibits the compounds. highest electrical conductivity. वैसे अगर आप इसे एल्कली मेटल से कंपैरिजन कराओ ना बेटा, एल्कली मेटल से अगर आप इसका कंपैरिजन कराओ तो alkali metals are having the low melting and boiling points and they have the low density. On the other hand, अगर आप physical properties देखते हो transition metals की, so the transition metals are having high melting and boiling point and they have the high density. वो जो आप catalyst वगैरह कह रहे हो ना, वो chemical property है उसकी. They are going to form a colored compound. This is the chemical property, right? Okay, this is not a physical property. तो अगर आप इसको अल्कली मेटल से कंपैरिजन कराओ तो दैट वुड बी ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट नॉट ऑल मेटल्स. तो ऑल मेटल्स में तो अल्कली मेटल्स भी आते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, करेक्ट. आगे चलूं? So sir, the answer was high melting and boiling points Answer. यस, and एग्जैक्टली. high हाँ, I क्योंकि density. इन्होंने think कह and दिया ना कि नॉट ऑल द मेटल्स, तो आप हाई डेंसिटी कह सकते हो, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो. सो दैट्स ऑल करेक्ट. Sir, बट for जो आप B, कह रहे हो I ना कि have the गुड same answer, कैटलिस्ट, right? सॉरी, BI का सेम आंसर है ना ये इसका. state two differences in the physical properties of the metals So once again I potassium have a and doubt. iron. बोलो So I बेटा. have a doubt. So ये question number 2. Give two physical properties of silver that are only characteristic of transition elements but not all metals. So एक से हम लिख दे high melting point और next पे लिख दे high हम्म, boiling point. बेटा आप Okay. कोशिश करोगे इनको थोड़ा डिफरेंट करके लिखो. बॉइलिंग और मेल्टिंग थोड़ा सा मैच हो जाता है, तो आप एक काम करो कि कह दो मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी, ज्यादा बेहतर है. Okay. ओके जी. So state two differences in the physical properties of the metals potassium and iron. तो बेटा आपको बताना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में दो डिफरेंस. सो आप कह सकते हो कि पोटाशियम इज सॉफ्ट, iron is hard. Sir, I wrote Iron that is it has a low hard. melting point. Potassium. Potassium has low melting point Please, right? and iron has high melting point. Okay. Okay. So I Done. wrote potassium is Yeah, less I dense wrote समझ आ than रहा है ना potassium बेटा? iron. is a good conductor of electricity and iron is a bad conductor. Okay. Okay. बेटा ये किसने कह दिया? So Potassium is a good conductor. Iron is a, both are good conductor बेटा. Both are good conductor. Sir, transition Both are good conductor. metals are better conductors, right? Sir, बेटा कंडक्टिविटी मेटल की सेम होती है, याद रखिएगा. तकरीबन सेम होती है, तो ये एक अच्छा डिफरेंस नहीं है बेटा. कुछ और बताइए जरा. जैसे मैंने लिखा है ना कि सॉफ्ट और sir, हार्ड हो गया, लो मेल्टिंग Sir, पॉइंट, हाई बॉइलिंग iron potassium. is पॉइंट, denser than डेंसिटी की बात potassium. कर लें. एग्जैक्टली डेंसिटी की बात कर लें आप, तो कुछ इस तरह के मतलब बेटर ऑप्शन की तरफ Potassium जाए बेटा. is okay. So अच्छा, potassium डिफरेंस is less बताएं dense इनकी than केमिकल iron. प्रॉपर्टी में. Potassium forms white compounds and iron forms colored compounds. हाँ, ये भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बेटा. कि डिफरेंस इनमें यह है कि पोटेशियम
does not form colored compound, जबकि iron forms colored compound, ये बिल्कुल हो सकता है, exactly yes. And Sir, potassium जो है वो yes. sir, for question number 2, in which we have to write the physical properties of silver, is it okay if I write it exhibits the highest electrical conductivity? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, no. So I wrote potassium is highly reactive with water, while iron does not react with water. वैसे ये भी एक chemical property हो सकती है, क्योंकि they are not as much as reactive as alkali metals. So I get the mark Yes, use. because I said हाँ बिल्कुल. okay. Okay. Lead is a metal with proton number 82. Use the periodic table to state the number of occupied electron shells in an atom of lead. तो वही बात है बेटा, आप देखते हैं इसका पीरियड नंबर और आपको वहां से पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स हैं इसके पास. पीरियड नंबर, period number period number is going to tell you the number of occupied electron shells. Sir, Okay, 6. I think so. This is in period 6, so 6 number of shells. Use the periodic table to state the number of electrons in the outer shell. So group number will tell you the outer electrons. It's 4. Sir, 4. Okay. Copper is a transition element. Name two transition elements or compounds of transition elements which are used as catalyst. For each catalyst, name an industrial product made using the catalyst. Sir, ये तो मैंने iron बताया था आप लोगों को. Iron is in used for So Haber iron iron is process. in oxide, what? Haber Haber process. process. Haber process. Sir, copper. Haber process. And vanadium for contact. Or Vanadium for vanadium contact. contact Sir, can we write process. copper and zinc? Sir, अब vanadium में भी hydrogenation. बेटा प्रोसेस का नाम बताइए जहां पर कॉपर और जिंक यूज होता हो एज अ कैटलिस्ट. उस प्रोसेस का नाम भी Copper, बताएं. it is like the petrochemicals, and for zinc, it is the metallurgy. नहीं बेटा नहीं, ये है हमारे सिलेबस का पार्ट ना, हेबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस. Contact process. और निकल कैटलिस्ट भी होता है हमारे पास, वो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, मार्जरीन. वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें ये कैटलिस्ट यूज हो रहे होते हैं, बट मेजर मेजर आपको यही याद होने चाहिए. Other than acting as a catalyst, state two properties which are specific to transition elements. Yes. They have high densities. They have varying oxidation states and they form They colored have compounds. variable, Colored exactly, And color compounds with variable, their special forms. They are good conductors of variable heat. oxidation state. They form colored compound. Okay, good. The density of liquid krypton. Predict the density of liquid krypton. Yes. आप ट्रेंड देख लें बेटा, ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो So, रहा है. like, sir, any number तो Something ऑब्वियसली यहाँ भी between इंक्रीज ही 2. होगा, Sir, I wrote 3.5. क्योंकि जो 2.45. बेटा I ये want to be रेगुलर 74. ट्रेंड है. दिस इज ओके, दिस इज अ रेगुलर ट्रेंड, और रेगुलर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना इज क्वाइट इजियर एज कम्पेयर टू द वन विच इज फॉलोइंग द इरेगुलर ट्रेंड. तो ये तो बड़ा आसान है बेटा. तो एनी वैल्यू बिटवीन 1.4 एंड 3.52, अब इसका वो ले लें, एवरेज ले लें इसका. 1.40 plus 3.52 divided by 2. What's an answer? Hmm? Yes, 2.3. Sir, 2.46. 2.3. Okay, this value is correct. Sir, The boiling point of 3.16. xenon. So I took 2.5. Is that a problem? Or just like any number No, no. below Okay, minus exactly. 152. Minus Exactly, 108. exactly.
Okay. Sir, I Argon wrote is a gas at 20, room. 20. तो No आपने वापस गेस problem. मारी है? Sorry. So did you take तो कुछ कह any रहे थे अब number आप? below 152? हाँ जी। इतना कम नहीं लिखना कि बिल्कुल ही कम हो जाए बेटा। आप ट्रेंड को देखने कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। सब ट्रैक करवा के देख लें कैलकुलेटर से, आपको पता लग जाएगा। आइडिया हो सर जाएगा हम कि कितना डिफरेंस आ रहा है। सर हम बस इन दो इसका को सब ट्रैक करवा लो, इन दो को करवा लो सब ट्रैक, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ओके। रेंज लिखी हुई होती है। बहुत बड़ी रेंज नहीं होती है कि आप कुछ भी लिख लो, मतलब ऐसा नहीं होता। Argon is a gas at room temperature. Describe the arrangement and motion of the particles in a gas. Yes, beta. Arrangement. Arrangement. widely Arrangement and spread, So motion. they're space, randomly arranged. Random. Randomly arranged. Random. I widely wrote spread. apart. Yeah. They are far away from each other. Far away. Therefore, the motion, Further it has rapid apart. motion in random directions. Yes, sir, random and continuous. Further apart. And random and continuous. Yes, the noble gases are unreactive. Why? Outer shell, sir. Because that Because will already have complete outer are shells. stable. And they don't need any more electrons to complete our shells since they're all full. So because they have a stable electron shell. Their valence shell is complete. They do not need any electron. क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्पी है, खुश है, वो उसको जरूरत ही नहीं है बेटा। तो ये तो नहीं आ रहा ना? नो बेटा नो। अच्छा जी, कुछ चीजें हमें हैलोजेंस की डिस्कस करवानी थी ताकि हमें पता लगे कि आपने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, आपने उस पर अमल किया या नहीं किया। यानी कि हैलोजेंस मैंने आपको कहा था कि वो देखना है, तो उससे कुछ पार्ट, लेट मी जस्ट आस्क सम क्वेश्चंस टू हैव एन आइडिया कि आप कहाँ पर हैं इस टाइम। सो एज यू कैन सी दिस, तो मुझे बताएगा सबसे पहले, मैं जिससे पूछूंगा। ओके बेटा, मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला आयशा से। आयशा, एक्सप्लेन व्हाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। Sir, I sent you this also on WhatsApp. I didn't understand this page. तो ऐसे ही जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई आइडिया? Sir, because they all Sir, have like the same is it? number of Yeah, electrons. गुड that's what I said. गुड I was गुड gonna say the गुड same. गुड गुड। क्योंकि इनके पास सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? सेम होती है। Sir, can you नेक्स्ट, please डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। So, sir, यस। in the same groups and periods, if they have the same number of electrons in the outer नो बेटा shell, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ओनली। लाइक फ्लोरीन हैज 7 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ब्रोमीन के भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयोडीन के भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जब उनके आउटर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। so meaning they're in the same group, right? हाँ, सेम सेम थिंग सेम थिंग, दे आर इन द सेम ग्रुप। लाइक sir? सोडियम की भी Sir, वही प्रॉपर्टी है केमिकल जो लिथियम की है, वही पोटेशियम की है, वही रुबीडियम की है, वही सीजियम की है। क्योंकि दे ऑल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। अब सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंस है तो फिर सोडियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी में भी काफी डिफरेंस है। सो डिपेंड्स ऑन द आउटर नंबर ऑफ लाइक आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ओके। okay sir. तो मेरे पास एक और डाउट है। गुड। सॉरी सर, आप ये फिर से आप ये वर्कशीट सेंड कर सकते हैं? जी बेटा, भेज देंगे भेज देंगे, नो टेंशन।
Okay. Okay, sir. Okay, good. Yes, next beta. Usman, describe what is observed during the reaction. Sir, is this an redox reaction? Sir, Yes, this is a redox reaction, but they are gains an asking what is electron. observed. Cl2 gains electrons. Beta, what is observed? You have like, will you observe electron Sir, change? chlorine Electron gains क्या मतलब electrons, meaning it's reduced. still wrong answer. They are asking what is observed. You have to बेटा इसका मतलब आपने हेलोजेंस पूरा देखा था बेटा Chlorine पूरा displaces देखा था iodine. chlorine displaces iodine. Who is this? Sir, I didn't see it. I didn't watch it. I'm gonna watch it Hamza. today. बेटा 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 देखिएगा जरा बेटा असल में हुआ क्या है यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि इसका कलर क्या है जल्दी से शाबाश Brown. यस बेटा Sir, देखें isn't आपने it in देखी a नहीं है हमने gaseous आपको बोला state? था बेटा Gaseous ग्रीनिश state? येलो ग्रीनिश येलो गैस या येलोइश ग्रीन तो ग्रीनिश येलो गैस आपकी कन्वर्ट हो गई बेटा ऑरेंज सॉल्यूशन में ऑरेंज तो क्या सॉल्यूशन में हेलोजिनेशन वाली वीडियो देखनी है ना? जी तो बेटा अभी हेलोजिनेशन तक वाली तो वीडियो है देखी ना? नहीं है नहीं सर बेटा मैंने ऐसे वो आप वर्कशीट लोग नहीं करो कर ली बेटा थी। नहीं नहीं जो बोलूं ना वो काम लाजमी किया करो बेटा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपकी उसका मैंने सोचा हुआ होता है पूरी सेटिंग की हुई होती है क्या करना है कब क्या नहीं करना है तो ये लाजमी आप लोगों को देखनी है बेटा हर हाल में हर हर सूरत आपको देखना है ये क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जिसने देखी होगी वो ये चीजें बता पाएगा तो फिर अब ये बताइएगा जरा शाबाश जल्दी से एक्सप्लेन व्हाई aqueous bromine does not react with aqueous zinc chloride yes Because you can Sir, displace the because chlorine is chloride more gas. reactive. good better this is bromine and this is zinc chloride right so they are saying they are not going to have any chemical reaction there is no reaction because beta bromine is less reactive than chlorine so how it can displace less reactive than chlorine okay yes this is also a good question शाबाश जल्दी से बेटा अब आप बताएं शहजादी फातिमा आप बताइएगा जरा बेटा बी पार्ट वन बी पार्ट टू हुजैफा आप बताइएगा Sir, the products of the reaction, it'd be sir, I'm not sure. ओके हाँ भाई बेटा एनीवन एनीवन Sir, potassium and iodine. potassium and iodine Potassium chloride and iodine. Sir, chlorine and potassium. chlorine and potassium okay let me check this so name the products of this reaction so see this when chlorine that is Cl2 is going to react with potassium iodide, it's going to form KCl plus I2.
So the products are potassium chloride and iodine. Okay. And when aqueous bromine is added to potassium chloride, then there is no reaction. Explain why there is no reaction. Again, the same thing. Bromine is Sir, Because potassium chloride. bromine is less Less reactive than chlorine, chlorine. Less reactive than potassium than chlorine. chlorine. Exactly. Good, 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 so good. why did we get a separate iodine? Why did we get a separate iodine? क्योंकि बेटा उसने तो उसको डिस्प्लेस कर दिया ना, क्लोरीन आया और उसने आयोडीन को यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन ने, तो आयोडीन अपनी फॉर्म में आ गया, क्योंकि दे आर डायटोमिक ना, ये अपनी डायटोमिक स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो इसलिए उसको मैंने सिंगल करके लिख दिया। कोई है ही नहीं वो किसके साथ कंबाइन हो, और अकेला Okay, आयोडीन sir. तुम लिख नहीं सकते क्योंकि दे आर डायटोमिक, उनकी नेचर है कि वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना? सब 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 ग्रुप 7 के सब मेंबर्स बेटा, लेकिन जब वो किसी के साथ कंबाइन होते हैं तो फिर डायटोमिक आप नहीं लिख देना। मतलब KCl2 लिख दिया आपने, पता लग रहा है, पूछा तो कह रहे हो कि ये तो डायटोमिक होते हैं, सिंगल डायटोमिक होते हैं ये, जब अकेले होते हैं तो डायटोमिक में रहते हैं। ओके। ओके सर, ओके। ये बताइएगा जरा ए का पार्ट 2, ए का पार्ट 2। Sir, because it's an irregular sequence, it's not हाँ like जी, इरेगुलर है, इरेगुलर है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम आप देखो ना यार, कि जो है वो it's शुरू से increasing or थर्मल decreasing. कंडक्टिविटी एग्जैक्टली 84 से 142 हुआ, तो नीचे वालों को तो ज्यादा होना चाहिए ना, ये देखो 58 फिर कम हो गया, तो आप कैसे बता सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो इरेगुलर ट्रेंड की वजह से। सर तो उस क्वेश्चन में करना क्या था? बेटा बस यही बताना था बेटा आपको। ओके सर। अच्छा जी, यस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर halogens. State the trend in the color of the halogens from chlorine to iodine. सर ग्रीनिश, Sir, it becomes darker as we go down. येलो टू, As they become more Becomes reactive. darker. Color gets deeper. या ट्रेंड बिकम्स लिखना डार्कर। है, ट्रेंड लिखना है आपको, लाइट becomes darker. State the फ्रॉम physical ग्रीन टू state of chlorine and iodine. क्लोरीन इज द So gas. लिक्विड। Chlorine Sir, is a gas. iodine is solid at Iodine room is a solid. temperature. Solid. Okay. Swimming pool used to clean the swimming pool. Okay. So state the two other properties which are typical of transition elements but not all metals. So their products and their solutions are not colorless. They have They different they yeah, they produce colorful solutions, They and form also colored compound. They can be used they as a act as catalyst. catalyst. characteristics. Exactly. They have variable numbers. They have variable oxidation numbers. They have variable oxidation numbers. They have variable charge. They can be used as a catalyst. They form colored compound. Okay. बहुत सारे ऑप्शन इसमें आप लिख सकते हो। बाकी ये है कि आपने हैलोजन्स देखना है पहले, ताकि आपको फिर हम आगे करवाएं आयोनिक इक्वेशन कैसे उसकी आप वो जो है ना वो फॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर ये है कि उसमें नोबल गैस भी है, और नोबल गैस भी उसी में ही है बेटा, हैलोजन्स में ही है। तो ये है कि इसके फिर थोड़े से पेपर 1 करवाना है मुझे आपको, आपका सिलेबस का 0620 5070 बोथ। पेपर 1 करवाने के बाद फिर इसको बाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखो बेटा, लाजमी देखना है, आप तो सुनते नहीं हो बात को। तो वो वर्कशीट जो मैंने आपको भेजी थी वो इसके बाद ही करनी थी आपको, लेकिन खैर उसमें इतना ज्यादा हैलोजेंस था ही नहीं,
हेलोजेन्स के क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप भले स्टार कह सकते हो इन क्वेश्चंस को, ये लाजमी आते हैं और बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये है कि आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह देखो और फिर जो है आप मुझे बताइए, रिव्यूज दें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह उसका टॉपिकल पास पेपर करेंगे हम हेलोजेन्स के। Sir,